Dear students, in this module, I will be giving you the demonstration on the sign test by taking a real life example. So students, this is a problem and I'm going to state that problem. In a study of myocardial transit times, Light et al. In 1973, who has conducted the study, has measured the appearance transit time in a series of subjects with angiographic normal light coronary arteries. The median appearance time for the group was calculated as 3.50 seconds. Suppose that another research team repeated the same procedure on a sample of 11 patients with significantly occluded site coronary arteries and obtained the results. Could the random team conclude at the 0.05 level of significance that the median appearance transit time in the population from which its sample was drawn is different from 3.50 seconds? So students, अगर इस statement में मैंने 2-3-4 चीजें highlight की हैं, that is what you are going to consider. देखिए उसने कहा कि median appearance time 3.50 seconds है, which is to be testified for the population. So एक टीम ने एक 11 का सैंपल लिया, यहाँ पे आपको गिवन है, which is denoted as small n. Then ये देखिए n जो हमारा होगा वो 11 होगा. 11 पेशेंट्स के ऊपर उन्होंने दोबारा से ये प्रोसीजर परफॉर्म किया अंडर द 0.05 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस विच इज अल्फा. और टेस्ट क्या करने जा रहे हैं कि क्या जो सैंपल पहले कैलकुलेट हुआ विच वाज कंडक्टेड बाय लिडले एट ऑल, और जो सेकेंड टाइम सैंपल एक और रिसर्च टीम ने कैलकुलेट किया, they just wanted to make a comparison कि क्या जो median transit time था that remains the same or is it different by taking another sample. और वो जो median है, population median, वो आपका क्या है 3.50 seconds. So students, ये आपको data given है. Total number of subjects कितने थे 11 and their transit times are being observed. Now we'll be making use of this data of transit time to follow it for testing the required hypothesis. So students, for that we would have to follow the testing procedure under the sign test. The first thing we would have to do is to construct the pair of hypotheses. So ये हमने formulate किए हैं यहाँ पे hypothesis because we need to test कि क्या median transit time 3.5 ही रहा है or is it different for the latest sample. So by different, what do we mean? That median is not equal to 3.50 and if it remains the same, तो उसको हम denote करेंगे by m equal to 3.50 where m stands for the median. Second step is the construction of level of significance that was being specified to us as 0.05. The third thing we would have to specify is the test statistic. So students, उसके अंदर we would have to calculate these deviations xi minus m. अब m देखिए हमें given था, it was specified as 3.50. हमने हर value को, observation को इस 3.50 जो कि हमारी value थी hypothetical median which was being given as 3.50 उसमें से minus किया और ये हमारे पास desired results आए. देखिए ये हमारा xi है और ये हमने deviations calculate की हैं by subtracting the median from each observation. For example, 1.80 को जब आप minus करेंगे 3.50 से, तो that will provide you with the negative sign. 3.30, as we know that it is lesser than 3.5. So students, जब इसको minus करेंगे तो again we'll get a negative sign. उसके बाद 5.65, which is a positive value and it is greater than 3.50, तो यहाँ से हमें मिला positive sign. Whereas if we look into the sixth observation, which is exactly identical as that of the median, इसका आंसर हमारे पास आ गया 0. So it is not being treated as a positive or being a negative value. So because it is exactly equal to the median, so इसको हम लिखेंगे 0.
अब स्टूडेंट्स देखिए, यहाँ पे अगर आप काउंट करें नंबर ऑफ पॉजिटिव साइंस को और नंबर ऑफ नेगेटिव साइंस को, सो देयर वाज ओनली वन पॉजिटिव वैल्यू इन द डाटा. सो पॉजिटिव को हमने लिखा 1, जबकि नेगेटिव जो साइंस से देवर 9 वैल्यूज विद द नेगेटिव साइन. अब देखिए n यहाँ पे 10 है. Why it comes out to be 10? Earlier it was taken as 11. So हमने जो स्टडी स्टार्ट की थी वो सैंपल ऑफ साइज 11 के साथ थी. स्टूडेंट्स, इसको हमने 10 कैसे कर दिया? हमारे पास एक वैल्यू, एक ऑब्जर्वेशन ऐसी थी विच वॉज एग्जैक्टली आइडेंटिकल टू द मीडियन. So we would not consider that value within the sample. So अपने टेस्ट स्टैटिस्टिक को परफॉर्म करने के लिए हम सैंपल साइज में से उसको माइनस कर देंगे. So 11 में से जब आपने 1 ऑब्जर्वेशन माइनस की which was exactly identical to the median, तो आपके पास n रह गया 10. अब आपकी जो डिजायर्ड टेस्ट स्टैटिस्टिक जो आपने कैलकुलेट करनी है, प्रोबेबिलिटी k लेस इक्वल टू k गिवन n, 0.5. अब देखिए स्टूडेंट्स, के हमारे पास 1 था क्योंकि जो आपके पॉजिटिव और नेगेटिव साइंस में से whosoever is taking the least value उसको हम कंसिडर करते हैं एज के. सो के क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू सिर्फ एक ही थी, सो इसके लिए हमने के को कहा 1. n was taken as 10 क्योंकि एक वैल्यू हम माइनस कर चुके थे 11 में से, बिकॉज दैट वैल्यू वाज एग्जैक्टली द सेम एज दैट ऑफ द मीडियन. उसके बाद p है हमारे पास proportion of the values that come under the median, because by definition the median is a value which divides the data into two equal halves. So we are considering that positive signs are the same as that of the negative signs. So students, ये value हमने p की ली 0.5. So by plugging this information under the probability, so ये आपके पास p आ गया k less than equal to 1. So students, n इक्वल टू अगर आपका 10 हो, आपका अगर p 0.5 हो, तो आप बाइनोमियल के टेबल में से दो डिजायर्ड प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट करेंगे. प्रोबेबिलिटी k इक्वल टू 0 एंड प्रोबेबिलिटी k इक्वल टू 1. क्यों? बिकॉज k हैज टू बी लेस देन इक्वल टू 1. सो ये क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी आपको कैलकुलेट करनी थी. सो k लेस देन इक्वल टू 1 का स्टूडेंट्स क्या मतलब हुआ? 0 and 1. Why? Because the binomial distribution random variable would start from 0 success, 1 success and so on up to n successes. So students, यहाँ पे आपके पास क्योंकि k less than equal to 1 है, that means probability of 0 success plus the probability of the success equal to 1. So summing over these two probabilities, you will get the value 0.0108. So students, जब आपका n 10 है, p 0.5 है, आपने बाइनोमियल टेबल का यूज किया, ये दो प्रोबेबिलिटीज डिजायर्ड कैलकुलेट की बाइनोमियल के टेबल में से, एंड दोज टेबल्स आर वेरी मच अवेलेबल इन ऑल द टेक्स्ट बुक्स, स्टैटिस्टिकल टेक्स्ट बुक्स. सो वहां से बाइनोमियल के टेबल से आपको ये दो अदद वैल्यूज मिली प्रोबेबिलिटीज की. एडिंग बोथ ऑफ द वैल्यूज, यू गेट द डिजायर्ड p वैल्यू एज 0.0108. नाउ स्टूडेंट्स, क्रिटिकल रीजन में हम कहेंगे, क्योंकि ये ट्रू टेल टेस्ट था, इफ कैलकुलेटेड वैल्यू इज लेस देन अल्फा बाय 2, देन वी आर गोइंग टू रिजेक्ट आवर नल हाइपोथेसिस. अब देखिए हमारे पास p वैल्यू जो आई थी, द प्रोबेबिलिटी वी हैव कैलकुलेटेड अंडर द टेस्ट स्टैटिस्टिक, दैट वाज 0.0108, और इधर अल्फा जो हमारे पास था स्टूडेंट्स, दैट वाज 0.05. तो अल्फा को जब आप 2 से डिवाइड करेंगे, दैट गिव्स यू द वैल्यू 0.025. अब आपकी क्योंकि कैलकुलेटेड वैल्यू is less than the tabulated value 0.025, so it falls under the rejection region. We will reject each naught and conclude that median is different from 3.50 as far as the sample of 11 patients is concerned.